Good morning to all of you. We'll just start in a minute or so as people are joining. Hmm. A very good morning to all of you. And today we'll start with our session in the ongoing course, Ancient and Medieval Science and Technology in India. Uh, Last Sunday we had a session on astronomy by Dr. Harshal sir, followed by uh, a session on mathematics by Professor Ameya ji. And she will be continuing today for mathematics, and then also further also she will connect it with some other topic as time permits. Uh, so we'll just start with a small prayer as generally we do. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Hari Om. So, welcome, Professor Ameya ji. We'll start with your session. We have already been introduced to her, so I guess everyone knows her. She's right now professor in engineering college, but also has been doing PhD in Sanskrit and has got a lot of things with her to share with us. So I hand over to you, madam. Please start the session. Thank you, Narendra sir. Namo Namaha. Suprabhatam. So I hope in last lecture you must have enjoyed the overview of the ancient mathematics, right? I guess all were present last time, right? So no need to brush up everything. So today we'll start with few new things or topics, बाहेर आवाज. especially नाही नको लाव. Narendra ji, please mute yourself. Thank you. So today we'll be discussing the chronological approach, or chronologically the geometry, then algebra, and the Anka Ganita. Okay. So last time we have already seen the three different types of mathematics, as well as the starting with the Shunya or Khahara Rashi. Khahara Rashi is the Ananta, infinity, right? So we have already seen the different sections plus the different mathematicians, right? So today our focus will be few problems or sums based on the भास्कराचार्य जी का mathematics जो उन्होंने दिया है. Commonly it is known as Pythagoras theorem, etc. Few more methods are there, or the simple formulae are there to calculate many things like Pascal's triangle, or Meru Prasthara it is called as, second order equation, first order equation, etc. So before we go to the Bhaskaracharya ji's era, we should just
we'll start with a basic of the geometry, that is the Shulva Sutra. Okay, so Baudhayana Shulva Sutra, it is one of the uh, earliest invention by the our scientist, ancient Indian scientist, we can see, before Pythagoras. Hmm? So we'll just go through those things and then we'll continue with the Bhaskaracharya ji, around 12th century. Fine. I have shared a few books with you. In that, one more book you can mention, the Prachin Bharatiya Ganit Part 1 and Part 2 by Professor Mohan Apte. Hmm? So he has written many books and research on the Bhaskaracharya ji, and also mathematics, astronomy, etc. Hmm? So these are also few. These two books are very good option to learn, to start with new things, and the steps are given, methods are given. Hmm? Both the books are in Marathi, but still you can correlate because simple mathematics is there. Prachin Bharatiya Ganit, Part 1, Part 2. So these are the mathematicians, prominent Indian mathematicians. I hope screen is visible to you. Yes, it is visible. Yeah. So all of you must be knowing, but if you don't know, you can pin on the screen where PPT is shown so that you can see it in the center. Okay, thanks. Yes, ma'am. Yeah. So if you go through the Indian mathematics, we have the Apastamba Baudhayana. In the era is 1500 BC, that is Shulva Sutra. So as I told you, Shulva Sutra, uska bhi kya hai actual representation, few Yajna Kunda or chitis are there, Shena Chiti, etc. So वो यज्ञ कुंड का जो एक्चुअल मेजरमेंट्स है, वो भी कैसे मेजर करते हैं एक्सेट्रा, विल डेफिनेटली गो थ्रू दोस. बट if you go through the era, the 1500 BC is the era for Apastamba and Baudhayana Shulva Sutra, you can see. Then the Bakshali manuscript. So this is the strong evidence from the India. Right now, Bakshali is situated in Pakistan near Peshawar. Okay. So the manuscripts, हस्तलिखित manuscripts बहुत सारा मिला था, and the period of this Bakshali manuscript is around 200 BC to 200 AD, in which the numbers are written. And if you correlate those numbers with our decimal system, these are one and the same thing. For example, I can give you, I can tell you ki this era, if you go through this era, then in that the Brahmi script was there. Okay, so Brahmi, and later on Brahmi is converted after so many years. The Devanagari script is it has come, and then later the Roman numbers, etc., came into picture. Okay, so Bakshali manuscript is the strong evidence, you can say, from the means mathematics or the number system point of view. I'll show you few photos also of those manuscripts. Then the Aryabhatta, scientist Aryabhatta, the 5th century, who has written the Aryabhatiya. So his creation is Aryabhatiya. Then Brahmagupta, 7th century AD, Brahma Sputa Siddhanta is his creation. Then Mahaviracharya, then Bhaskaracharya,
12th century, and then Narayan Pandit, Madhav, and so on. Hmm? So till 20th century, Ramanujan, the this the great means the मैथमेटिक्स का ओवरऑल जो प्रोग्रेशन हुआ है फ्रॉम द बौद्धायन शुल्ब सूत्र टू रामानुजाचार्य रामानुजन. सो यहाँ तक का ये जो जर्नी है, दिस इज अबाउट द मैथमेटिशियंस. So what Indians have discovered in mathematics? Okay, so mainly the discovery and the use of zero, the calculations with zero, discovery of place values, hmm, the infinity, knowledge of infinity, then loans, interest, permutation, combinations, ratios, proportion. Plus, there are a few rules regarding progression also. First degree, second degree, interdeterminate equation, then Pythagoras theorem, binomial theorem also, it was derived by the Bhaskaracharya ji. Area of circle, triangle, value of pi. Okay. So all these are the different, means in modern sciences, we have seen the sine, cosine, Taylor series, but earlier it was already discovered by Aryabhatta ji and Bhaskaracharya ji, the great mathematicians. Hmm? So these are the similar. Fibonacci series is also there, which is similar to the Pingala's Chanda Shastra. Hmm? So these are the different things. As last time we have discussed about the decimal number system. So some of the product, this has also given earlier. Importance of Ganita or mathematics, it is already given in Vedanga Jyotish. Last time only I have discussed about this. What is Vedanga, Jyotisha Shastra, and the Bhaskaracharya ji also gives an importance to the mathematics at great extent. Okay. So decimal number system, it is means if you go through the Vedic period, Rigveda, in Purusha Sukta, many times the सहस्त्राक्ष, पुरुष कैसा है, पुरुष सूक्त में पुरुष कैसा है, तो वो सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र नेत्र जिसको है, सहस्त्र हाथ है और शीर्ष मस्तक है, ऐसा पुरुष है. सो वो सहस्त्र is the word. So Vedic period also, they were knowing the decimal number system as well, like Dasha Angula. Angula is the measurement के लिए जो यूज होता है, and Dasha is the 10. Then त्रीणि, शत, सहस्त्राणि, शंच, चतुर्भिः, एक्सेट्रा, ये सब वैदिक में लाइक ऋग्वेद में मेंशन किया है. देन देर आर नंबर ऑफ chariots and elephants, soldiers, etc. ये सब महाभारत में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है with these quotations. So about there are few opinions about the Indian decimal systems over here, but we'll just move further. So this Professor Kim, she's saying that India gave mathematics to the world. Okay, so it was mentioned in the International Mathematics Congress in 2010. Okay, so this is very important to all of us. So we'll start with the Shulva Sutra, 1500 BC, that is Shena Chiti. So this is overall structure of Shena Chiti, और जो perform करना है rituals में यज्ञ कुंड जो रहेगा जहाँ पे हम लोग स्वाहाकार करते हैं, rituals करते हैं, the different shapes are there, and those shapes, Shulva is, as I told you, it is the
string or the rajju or dori, and with the help of that we used to measure or form the different structures like this. Hmm? So Shena Chiti plan is given. If you observe this plan, these are the combinations of the squares and triangles. Purely geometry is there. Hmm? The measurements are also shown over here. Shena Chiti. So it's a geometrical structure for performing the uh, sacrifice, you can see. Hmm? So it is, if you observe, the era is the 1500 BC. Hmm? And the era of Pythagoras is, see, if you observe here, there are again same logic is there. If triangle is there, the hypotenuse and uh, the area of triangle, etc., everything we have to calculate accordingly. Okay, so height is there, and the length, height, and the different formula we used to have in school days for calculating the uh, uh, hypotenuse, the same are applied over here. Okay, then one more thing is there, that is the Pythagoras. The If you observe, the era of Pythagoras is 570 BC to 490 BC. Okay, so 570, before 570 BC, this has been uh, invented earlier itself in Vedic period. Hmm? So Bodhayana theorem, the simple equation, same as the Pythagoras theorem is there, and there are like Pythagoras triplets. Here also we can apply same triplets like 3, 4, 5. Okay. Uh, so Bodhayana, in this, the square of the diagonal is equal to the sum of the squares of two sides. So same uh, is applied in case of Pythagoras. Hmm? So proof of this particular Bodhayana theorem is given with this uh, structure, you can say. Little complicated, but two-step theorem or proof, you can see. Two steps ka proof is there. So here the area of ACPQYA is given, in which there are different combinations of the triangles are there, triangle and square. Hmm? So square, every time we have to consider the different combinations like square ACRX, ACRX. This is main big one, big square. Then XSQY, SX QY, this one YQ, you can say. So this is another square, and the different triangles are added, the areas, and finally we get the area of the structure, the actual shape, whatever is given. Okay, and if you solve, then it is just a two squares. Okay, so a square is equal to b square plus c square, like that. Hmm? If you consider this particular triangle. So, as I told you, like Pythagoras triples, in Shulva Sutra also we have such type of triples, in which the different numbers are seen. The 5, 12, 13, 12, 16, 20, etc. numbers are given. Then another method is there. The method is again given in different steps. If you observe,
It is again given in the Bodhayana method. So square is there, and from the center, the one means the square. If you draw the means in this case, using circling method, we can find out the area. Okay, so area of square, area of circle, we can find out, and the overall from here to here, we can take the radius and we can mark the arc over here, and the different steps if we follow, then easily we can calculate the area of ABCD is equal to the area of circle of the radius OF. Okay, so both the things are equal. We can prove with these different steps. One more point is there with respect to the Shulva Sutra, like addition of two squares. Okay, so addition, how do we add these squares? So here the equation is given in which the AJ is equal to EF. ऐसा दिया है, this EF. Then JK is equals to AB. So JK is equals to AB. Now, again, two-step method is given with the Shulva Sutra. Only two steps, that's it, for adding the two squares. Then subtract, like addition of the square, again subtraction method is also given in Shulva Sutra. And if you observe, again, AJ is equal to EF and AL is equal to AB. Okay, so this AL is equal to AB. This is we have defined, and then AL square is equal to AJ square plus JL square is the equation, and then we can have the subtraction of two squares in this way. Okay. Then in Shulva Sutra itself, one quotation is given which gives the value of root 2. Okay, so this equation is important for the for calculating the value of root 2. So as I told you, the Shulva Sutra period is the 1500 BC. So at that time itself, the equation is written in this way. So Savishesha, the approximate value of root 2 is given with this Bodhayana Shulva Sutra. So many times the era and period is considered plus minus as per the different scholars, their own the concepts or method of learning those ancient things. The era is defined differently many times. So that is why here it is written BC 800 to 500 BC. Okay, but the root 2 ka value is given. Then this is Fibonacci series. We all know the Fibonacci series, which is again similar to Pingala's Chanda Shastra. So it is Matra Khanda Meru. Okay, so this series we can obtain, and it is similar to the Pascal's triangle, जो last time देखा था. Okay, if you remember. So this equation or the quotation is given in Chanda Shastra, Pingala's. So this is the Indian name is Matra Khanda Meru. And the Pascal's triangle last time only I explained you. So actually it is again by the Pingala, scientist Pingala, who invented the Chanda Shastra. So Laghu Guru form में this triangle is obtained. We are obtaining this thing. Okay. Again,
in Pingala's Chanda Shastra itself, we have the binary number system. So as we know, for digital thing, other computers, supercomputers, many uh, many times they say ki Panini's Ashtadhyayi can be used, or the binary numbers are given in the ancient mathematics. So actually, binary numbers are given in this Pingala's Chanda Shastra itself. Hmm? And the methods are simple when we derive or when we convert the decimal into binary by dividing the two and the remainder we used to have, right? Remainder again, it is divisible by 2 and so on. Hmm? So last में the remainder 1 आता है, तब तक वो कैलकुलेशन होता है, and then we used to have the 1010 के फॉर्म में output, the digital thing, digital system. So same thing is given in Pingala's binary number system, or the Chanda Shastra, you can say. Hmm? Then the Indian values of pi. So actually last time just एक pi का एक ही slide देखा था, but the value of pi is defined or derived in from the Vedanga Jyotish Shastra to Ramanujan. Hmm? So here if you observe, everyone has given the values of pi, different concept use करके उन्होंने दिया है. So almost all the ancient mathematicians, they have given the values of pi, right? So like Varahamihir, Brahmagupta, Bhaskaracharya, Madhav, Nilkantha, Shankarji, and so on. So if you observe here, Madhava has given the decimal places maximum value of pi दिया है यहाँ पे. Okay. Now here the Bakshali manuscript, if you observe the number system, so this is some this we got in excavations in Hadappa, Mohenjo-daro, और वो सब हुआ था. तो Bakshali manuscript we got, and in that the era is 200 BC to 200 AD. So in that, few things were mentioned related to number system. Okay, so number system. So if you observe here, these were the numbers. So these are similar to Brahmi, and then we can correlate with the actual number system, Devanagari, and the English numbers also. Then in Bakshali manuscript itself, the square root ka term and the quotations were given. So approximation formula for root n was given in the Bakshali manuscript itself. I know कि थोड़ा सा जल्दी ये होगा एक slides, because we have to cover many things. So as a certificate course for ancient sciences, these are the just few glimpses of or the overview of the topic mathematics. So Bakshali manuscript, in that the rational approximation is given and the method is also derived. I'll be sharing this slideshow with you today itself, so that later on you can go through those slides and methods, and aram se you can solve each and every sum or the example. So later, after Bakshali manuscript, the Aryabhatta, 5th century AD, 498 AD, the era is.
So correct value of pi he has given. So asanna, so approximate value of pi he has given with this method. So with the help of the polygon, he derived the value of pi. Then area of circle is also given by the Aryabhattaji. So area of circle, here the method is given कि कैसे calculate करना है. For example, the circle is divided into number of arcs, sections, and consider these arcs as a triangle. And those triangles का area calculate करके then the area of circle is calculated like that. So this is the method of calculating area of circle by Aryabhattaji. Then Aryabhatta has given the sine table as well. So the quotation is given and he has given the makhi, bhaki, faki, dhaki, ऐसा करके table he has given, and accordingly the sine terms, sine table he has given. Then normally we talk about the Bhaskaracharya. So Bhaskaracharya, 12th century AD, but he was the second Bhaskara. And who was the first Bhaskara? He is the another inventor or the scientist. First Bhaskara one, his era is 600 AD. He has also given the sine formula. So as per the Bhaskara's rule, the sine formula is given with this, and actual values are also shown in this table. So Bhaskara 1 and Bhaskara 2 is in 12th century, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती ये सब लिखा है. Then Brahmagupta. So as I told you, we are now moving chronologically from Shulva Sutra to Ramanujan. So Brahmagupta, 7th century AD, 628 era hai. Again, he has also given the sine formula. And also the Varaha, Acharya Varaha Mihir, also he also invented the same thing with a different combination, you can say, and later Bhaskaracharya. So these trigonometric relations are given by Brahmagupta, Varahamihir and the Bhaskaracharya. Lallacharya also. Okay? So Brahmagupta, again, the area of cyclic quadrilateral triangle, he gave the equation for this formula and the calculation part with this quotation. In his Brahmasputa Siddhanta, of course, Brahmagupta's Brahmasputa Siddhanta. Now, Brahmagupta also, he gave the interpolation formula. So, न्यूटन स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी ब्रह्मगुप्त जी ने डिफाइन किया है एंड दिया भी है with the difference also. So if you observe, lot of work has been done in this particular trigonometry area, geometry, trigonometry area. Also, Brahmagupta, he gave few more things in algebra as well, like Fibonacci series, the multiplication part also he invented in those days. Then after Brahmagupta in 12th century, the Bhaskaracharya ji. So in सिद्धांत शिरोमणि ऑफ भास्कराचार्य जी, उन्होंने वहां पे दिया है कि व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ भास्कराचार्य जी का एजुकेशन क्या है. तो उनका एजुकेशन विद्याभ्यास मतलब डिग्रीज कितना कितना है,
तो उन्होंने क्या क्या पढ़ा है? अष्टौ व्याकरणानि। सो पाणिनि का अष्टाध्यायी उन्होंने पढ़ा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। देन भिषज, षट भिषज, षट भिषज, इट इज रिलेटेड टू द आयुर्वेद। सो आयुर्वेद रिलेटेड उन्होंने ग्रंथ सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, ये सब उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, ये यहाँ पे वो बता रहे हैं। देन तर्क शास्त्र रिलेटेड 6 ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं, षट तर्कान। ओके, सो वो एक है। देन गणितानी पंच, गणितानी पंच, गणित रिलेटेड 5 डिफरेंट लोगों के उन्होंने साहित्य पढ़े हैं, ग्रंथ, अभ्यास अभ्यास उन्होंने किया है। जैसे आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, श्रीधर, पद्मनाभ, ये जो पूर्व सूरी है, जो मैथमेटिशियन है, इनका भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। देन चतुरो वेदो वेदः वेदाहा, सो 4 वेदों का अध्ययन इन्होंने किया है। सो यू कैन इमेजिन द सिंगल पर्सन, ही इज हैविंग द सो मेनी डिग्रीज। ओके, सो ये उनका क्वालिफिकेशन था। प्लस मीमांसा ग्रंथ उन्होंने पढ़ा है, प्लस भरतनाट्य शास्त्र के जो 5 ग्रंथ है वो भी उन्होंने पढ़े हैं। सो ये सब वो बता रहे हैं उनके सिद्धांत शिरोमणि में कि कितना क्या क्या भास्कराचार्य जी ने क्या क्या उनका मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। सो दिस इज वन थिंग, बट इफ यू आस्क मी कि मीन्स Bhaskaracharya ji is more close to our Maharashtra. Okay, so last time only, as I told you, he belongs to the place near Chalisgaon. ओके, औरंगाबाद चालीसगांव के एरिया में, वहां पे नजदीक है, मतलब देवगिरी हार्डली 40 किलोमीटर्स रहेगा ये एरिया से, जहाँ पे उनका मठ शायद सिचुएटेड था। सो आई एम गोइंग टू शो यू some pictures of that particular area and the inscription or Shilalik written by his grandson. Okay, so grandson ने जो लिखा है चंगदेव ने, उसमें एक दान पत्र है, डोनेशन दिया हुआ है मठ के लिए, तो उसका दान पत्र में वो लिखते हैं भास्कराचार्य जी के रिलेटेड। सो वो क्या क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। And later we'll go through few examples like otherwise now itself Leelavati is the best creation of Bhaskaracharya ji. Okay, and the simple examples he gave in this particular grantha. So who was Leelavati? इसमें भी बहुत सारे scholars का different एक ओपिनियन है। जैसे कोई कहते हैं लीलावती उनकी बेटी थी, कोई कहते हैं शिष्या थी। सो there are many narrations, okay, so or mythology, so we'll not go into that mythological aspect of Leelavati and other things, but the mathematics involved in Leelavati is very important. So you will enjoy the different examples. For example, this here, the peacock is sitting over here. This height of this particular stamba is given, and if you observe here the snake, I hope you are getting. Is it fine? We take the example. So this particular area, actual भास्कराचार्य जी का जो मठ है, वहां पे I have been to that place in 2010. Okay, so वहां पे सेम मतलब ऐसे बहुत सारे पीकॉक्स है, जंगल है, एक्चुअल ऑट्रम सेंचुरी इज देयर, गौताड़ा अभयारण्य एरिया, वहां पे दिस पितरखोरा केव्स एंड द पाटन देवी और द भास्कराचार्य जी का मठ इज सिचुएटेड।
So if you observe here, the peacock, the height of this stamba is given, and the distance of this snake is mentioned from this stamba. So height and this length is given, and if this peacock wants to catch the snake, and both are coming with a approaching with a equidistance, means equidistantly, if this peacock catches this snake, then at what point they meet each other, this is the one of the example. So if you observe, this is the right angle triangle, right, the 90-degree is there, and again we can calculate the this side using the same Pythagoras or the Bhaskaracharya ji ka example. Okay, so we can calculate this side of the triangle with a simple Pythagoras method, right? This is one example. I'll show you the भास्कराचार्य जी का एक जो मैंने बताया था ना, वो आई शो यू. The mud. So here in Siddhanta Shiromani, many things are there, and we have seen last time. So such a statue is there at that a particular area. One small museum is also there, Bhaskaracharya ji ka. See this. This is the temple, Patan Devi temple, and full Outram Century area is there. And in this temple itself, that inscription is there. So this inscription is there. Changdev, he was the grandson of Bhaskaracharya ji. Patan Devi, this idol Devi ka hai wahan pe. This is one more temple is there around that particular place, and one more inscription is also there. Nageshwar temple. This is another inscription, again written in the Sanskrit. So Pitarkhora cave is situated in that particular area, upper side of this particular temple, Patan Devi. So actually these caves were carved in the 300 BC to 300 AD, Satmala range of the Sahyadri. So Devgiri Fort, as I told you, hardly 40 kilometers away from this particular location. And in inscriptions, the different things we have seen, like this example of that Mayura example, ऐसा inscription में दिया है, and how to find out that third bhuja of the triangle. So this is one of the inscription. इंस्क्रिप्शन नहीं, सॉरी, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एंड ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत सारे मिले हैं जहाँ पे लीलावती के एग्जाम्पल्स आर रिटन. So this is the map of Maharashtra, and Satmala range में, see, this is your Aurangabad, Daulatabad, and here the Pitarkhola Leni, this is Chalisgaon. So यहाँ पे वो मठ सिचुएटेड था भास्कराचार्य जी का, ऐसा कहते हैं. So in that inscription, Shila Lake, which was found in the Patan Devi temple, वहाँ पे the family tree of the Bhaskaracharya ji दिया है by the Changdev. So Changdev, ये जो पाटन देवी शिलालेख ये जो मिला है इंस्क्रिप्शन, so
भास्कराचार्य जी का ये ग्रैंडसन है. एंड सिमिलरली Bahar में भी, Bahar is situated here. So Bahar में भी one of the Shilalik or the inscription was found. So it is called as Sarja Devi Shilalik, and another one is the Patan Devi. So with this background, the family tree is given. So Bhoja Raja ka Vidyapati was the Bhaskar Bhatt. And then Maheshwar, Bhaskara, Lakshmidhara, Changdev. So Changdev ने वो inscription लिखा है. See, this is your Devgiri, Ellora, Patan Devi. It's situated over here, and this is Chaisgarh. Location, Google map is shown. Again, when copper plate was found, in which few more things came into picture. In that also the भास्कराचार्य जी रिलेटेड बहुत सारे, मतलब उनका गोत्र कौन सा है, क्या है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है. सो दिस दान पत्र डोनेशन दिया है. सो डोनेशन के इसमें क्या क्या है उसमें जस्ट मेंशन किया है. देन इन सिद्धांत शिरोमणि the birth date of the Bhaskaracharya ji was written. So at the age of 36, he's saying that at the age of 36, ये last time हमने किया था, रस 6 गुण 3 पूर्ण, रस गुण पूर्ण मही, ऐसे एक करके 1036 मेंशन किया है. एंड देन 1036 plus 78 is the 1114 AD. So in this year, Siddhanta Shiromani was written particularly. So in this Siddhanta Shiromani itself, he is saying about his the residence. Okay, so Asit Sahya Kula, सह्याद्री, चांडिल्य गोत्र, ये सब वो वहां पे उसमें सिद्धांत शिरोमणि में भी मेंशन कर रहे हैं. पितृवर्णन, निवास स्थान, विच आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पाटन देवी और पितरखोरा एरिया. सो एजुकेशन ऑफ भास्कराचार्य ये भी देखा है. वैल्यू ऑफ पाई ही गेव with this equation. Again, the numbers are represented with the words. Then the ekam, a1 to 10 raised to 17 parardha. So this 10 raised to 17 यहाँ तक numbers उन्होंने define किए हैं. Then in Goladhyaya, now Goladhyaya is one of the part of the Siddhanta Shiromani. In that also he gave the idea of force of gravitation. So Gurutvakarshana, force of gravitation equation also he gave. Then how to calculate the distance between two cities. एक example उन्होंने दिया है with this equation. With the coordinates north south pole ये करके यहाँ पे two cities, between two cities, how to calculate the distance, वो यहाँ पे example दिया है. Plus with the example of again two cities, he has derived the circumference of the earth. The quotation is also given over here. Then the very minute things about the Kala Ganana, Kala Mapan he gave. So the different tables he has given in his work Siddhanta Shiromani. One more thing is there, that is Ghatika Yantra. Okay, so Ghatika Yantra is nothing but normally the narration about Leelavati
is गिवन की लीलावती उनकी डॉटर थी, उनकी शादी थी, एंड ऐसा कुछ प्रेडिक्शन, निगेटिव प्रेडिक्शन हुआ था कि उनकी शादी ही नहीं होगी, शादी नहीं टिकेगी या ऐसा कुछ होने वाला है. सो ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर टाइम, घटिका. सो घटिका यंत्र यहाँ पे होता ऐसा है, बीच में एक होल होता है एंड देन वो एक 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 द टाइम, द मेजरमेंट ऑफ टाइम is done with the help of this Ghatika yantra. So होता ऐसा है, at the time of her marriage, actually Bhaskaracharya ji was trying to avoid that time कि एक ये टाइम हो जाए देन मुहूर्त निकालते हैं ना वैसा, but somehow he could not achieve that because वो घटिका यंत्र देखने के लिए लीलावती जस्ट ऐसे देखती है यहाँ पे, तो उनकी जो बिंदी होती है, अक्षता जो रहते हैं ना, चावल के कण, अक्षता जो कहते हैं, तो वो वहां पे घटिका यंत्र में जहाँ पे होल होता है वहां पे गिरता है. एंड फाइनली मतलब इतना एक्यूरेसी मैथमेटिशियन होते हुए भी वो बेटी के लिए वो एक टाइम अवॉइड नहीं कर पाए, ऐसा भी कहा जाता है. ओके, सो दिस इज घटिका यंत्र, द पिक्चर ऑफ घटिका यंत्र. 9 टाइप्स उन्होंने काला गणना रिलेटेड दिए हैं, विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. सो इन लीलावती द आइडिया ऑफ इंफिनिटी ही गेव, which is खहर राशि, ये लास्ट टाइम भी किया था. So I'm just going through those slides. So this, the example of peacock and serpent दिया है. So height of this stamba is given and the distance between that stamba and peacock is mentioned, and the third side we have to calculate. Then he gave the example of Mahabharata कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ये जो मतलब अर्जुन एंड कर्ण के बीच में युद्ध चालू है एंड वध करने के लिए कितने बाण वो यूज कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे उन्होंने विद दिस एग्जाम्पल दिया है. महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए वो कैलकुलेशन उन्होंने दिया है. Then again the similar example of monkeys कि the monkey sitting on this tree, coconut tree, वो यहाँ पे जंप कर रहा है एंड ये भी मंकी सेम इक्विडिस्टेंटली कहाँ पे वो मिलेंगे या यहाँ पे रीच करेंगे टुवर्ड्स वेल, ऐसा कैलकुलेशन है. One more example he has given about the elephants कि पॉन्ड में नंबर ऑफ एलिफेंट्स कितने कितने हैं. ओके, सो एलिफेंट रिलेटेड कैलकुलेशन he has mentioned, and 1/3 है, 1/6 है, 1/7, कितने कितने थे, एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट्स जो विहार कर रहे हैं पॉन्ड में, उसका कैलकुलेशन उन्होंने बताया है. One more example of lotus. Okay, so here the lotus is there, and चक्रवाल, ये जो चक्रवाल पक्षी है वो मतलब वो नीचे जाके जो फिश है उसको कैसे मतलब कैच करेंगे, एंड द लोटस का जो रूट है वो नीचे तक जाता है, एट विच हाइट and distance, both the distances are mentioned. This, the distance between the lotus and the चक्रवाल पक्षी, and this नीचे जाके वो कितना ले पाएंगे. So again it is Pythagoras theorem, the similar problem. Another problem is there
रिगार्डिंग शिव के हाथ में कितने सारे आयुध हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फैक्टोरियल. सो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन हम लोग जो करते हैं वो यहाँ पे दिया है. हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट आयुधस विच आर देयर इन द शिवास डिफरेंट हैंड्स. सो ये एक अनदर एग्जाम्पल इज देयर. अगेन Bhaskaracharya ji had given the idea of limit also. Okay, so limit का idea, with this equation, he has mentioned the limits. Normally हम लोग जो limit 0 tends to 0 to infinity, 0 to 10, etc. depending on the application, it varies. वो भी उन्होंने mention किया है. प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेसिस वो हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देखा था. ही गेव द प्रूफ इन जस्ट 2 लाइन्स, भास्कराचार्य जी. हाँ, one more thing is there, that is Kuttaka. So as per the Bhaskaracharya ji's term, this the equation of first order equation, that is called as pulverizer. Okay, so it is nothing but the Bhaskaracharya ji says this particular thing, that is Kuttaka. So he mentions this first order indeterminate equation or pulverizer as a Kuttaka. So the method is given over here, and whatever we get at the division, so division say again we can multiply like this. And the equation ax plus b is equal to cy. This is actual equation जो हमने पढ़ा है. And here Bhaskar's example, he gives the example 100x plus 90 is equal to 63y. So simple division method से we can get the output. One more thing is there, that is Chakraval Paddhat. So Varga Prakruti, it is called as Varga Prakruti Chakraval Paddhat, or the method. It is second order indeterminate equation. So it is, this was the first order and this is the second order. So 61 x square plus 1 is equal to y. This was given by the Bhaskara, and at the same time, normally we used to have the Pell's equation. It does have the connection with the Bhaskara's method and the Pell's equation. So this is also another thing. Meru Prasthar Pascal triangle already देखा है. About astronomy already आपका दूसरा session होने वाला है. These are the few things given by the Bhaskaracharya, like periodic time of planets, revolutions in Kalpa, sizes of the disk of sun and moon, also revolutions of planet, modern days and Bhaskar days के टाइम पे क्या क्या था, कैसा कैसा difference is given over here. So this is about the different methods or the different things or examples mentioned in the Leelavati and Siddhanta Shiromani. Okay. So right now I'm done with the mathematics part of the overall ancient mathematics from the Shulva Sutra to the Bhaskaracharya ji 12th century. So, ma'am, you suggest we'll have a small break or something? Yeah, definitely. And then we'll take, so question answers we'll take at the end of the second session, or yeah, sure. not now, no? Yeah. Okay.
So after 15 minutes, we'll continue. Is it fine? Yeah, you can come after 15 minutes. Before that, Yeah. suppose somebody has any doubt, will some other doubts about Yeah, program, we sure. can have question answers. Okay. So the I'll be session of sharing these two PPTs with you. yeah. So we'll start the second session at 11:15. So, but before that, suppose anyone wants to ask for any doubt about the not this session. This session question answer will take at the end of the second session. But suppose any other question you have in mind, you can please ask us before 11:15 also. We'll have a small break and then we'll come back again. Okay. Thanks so much for joining, and we'll have the second session by 11:15. We'll be there from 11:10. Suppose anyone has got any question, we will try to answer that in 5 minutes before the second session starts. Thank you. I will having full recording after say 2.5 hours of recording. Yes, Sandeepji, I could not get your question. Can you repeat, please? No, I just want to ask you. Sometimes in Teams, Microsoft Teams, unless the meeting ends, recording cannot be saved. Uh, Ah, so I wanted to check: is that the restriction in this Google Meet? Then what we can Google do is Meet we all can also. quit. No, you can quit and rejoin, or you can be in the meeting only. Our recording will be for the full session always from 10 to Okay, 12. okay, okay. A full Yeah, session my will only get recorded. suggestion was yeah, Narendra my ji, my we sug- can break this, means we can stop this recording and later we can continue with the another thing. Yeah, we can do also, but Ah, yeah. doesn't seem to have What happens any is advantage. yeah, Narendraji, advantage is sometimes file becomes a little smaller. Instead of 2.5 hours of recording, Hmm. this will be 1 hour recording and another one maybe when we start at 11:10 or 11:15. Just a suggestion. But Yeah, if yeah, you have yeah. not faced any issue, No, so we memory is not an issue. We have got 2 TB memory, so that issue. in uploading, Secondly, we may as well yeah, continue. yeah, we have to upload it on Google Drive only, because without that directly WhatsApp or this attachment does not go. So I guess it will be the same, but yeah, it does not. You, unless there No, is no, any yeah, I agree, I memory agree. problem, Yeah, it has to be on we may drive not only, get the definitely. advantage. But let me check it out. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, no problem. Thank you.
आधी त्या बोलणार आहेत ना. किसी को कोई क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट? As we said, we can have some question if it is there in general. And why we are connecting these two now, mathematics, is slightly we are connecting with now physics and especially town. We start with town planning and we will connect with some part of physics also. ये क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा कारण उसका लॉजिकल कनेक्शन मैं बताऊंगा, जैसे अमिया मैडम स्टार्ट करेगी उनके साथ ही। उसके पहले अगर किसी को कोई पिछले बार का भी या ये बार का भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक पॉइंट जो हमने अभी ग्रुप में भी रखा है, वी हैव पुट इट ऑन द ग्रुप आल्सो, दैट वी हैव गिवन यू द फ्लो ऑफ द every week what is going to be covered, and secondly we have also given what we call as presentation one slot we have kept, because that was one suggestion also, and otherwise also in our programs we prefer to have a presentation sort of at the end by the participants. So there, if you have any doubt about that, you can ask me now or you can ask me afterwards also. आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है आपके इच्छा अनुसार, और उसके ऊपर एक 5 मिनट या 10 मिनट का आपको पीपीटी प्रिपेयर करके बात करनी है, either in Hindi or in English. You have to take one topic, any topic connected with this entire science and technology in India subject, and then prepare a PPT or prepare a video or anything you like, and just present it in front of the others. So what is a reason for that? It also allows you to go into the subject, discuss with us. As you are going ahead, you can always talk with me. Fortunately, I'm coordinating most of the subjects, so even if you pick up from any side of this particular whole course, I'm sure I can add something to that for your benefit. So that way, it is not only your effort, you are also will be getting mentored. Apart from me, suppose required, I will ask some more people to help in case required to take the subject ahead. And second thing, as I told that day also on the group, ये जो हम लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इवन लास्ट के पहले भी अगर किसी को कुछ कहना है, 2 मिनट 5 मिनट का कुछ आपको प्रेजेंटेशन करना है, हमारे पिछले, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये थर्ड बैच है, इसके पहले भी हमने ये आह्वान किया था, और कुछ लोगों का अपना ही एक इच्छा रहते हैं, बोलते कि सर ये जो हमारा बीच में ब्रेक है या एंड में है, सो आई लाइक टू प्रेजेंट सम टॉपिक फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स, सो यू आर वेलकम. डोंट थिंक दैट दिस इज जस्ट हम कुछ बता रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं. You can also come out with some your observations, your topic which you prepare, and during the flow of these weeks also, anytime you feel, only thing is just to avoid the sort of chaos. You can tell us well in advance कि मुझे अगले टाइम में करना चाहता हूँ 2 मिनट 5 मिनट, और जो भी मेरा टॉपिक है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा पीपीटी है या जो भी मेरा प्रिपरेशन नोट है, पीपीटी होना चाहिए ऐसे भी नहीं, यू कैन स्पीक ऑल्सो एंड जस्ट रीड द नोट्स व्हाट यू हैव गॉट. तो थोड़ा पहले हमें बता दीजिए वीक में, ताकि हम पहले से वो स्लॉट आपके लिए रख देंगे अबाउट 2 मिनट्स to 5 मिनट्स, दैट इज ऑल्सो गुड. और एंड में भी आप अगर करना चाहते हैं एडिशनल टू दैट, एडिशन टू दिस इन बिटवीन स्लॉट्स, ऐसा नहीं कि बीच में किया तो बाद में नहीं करेंगे, वहां भी आपका वेलकम है. एंड द होल आइडिया, एज अदर डे ऑल्सो समबडी टोल्ड फ्रॉम आवर ग्रुप ओनली, so that we can also get experience of going through these subjects, doing something, preparing for it. And if you remember, I had told you earlier that many of our people who participate in our courses, they remain permanently attached with us. That's a grace actually, we have got God's grace. कि वो हमेशा हमारे साथ बाद में भी रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए तो भी. तो हमारे कुछ प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे हाँ ये व्यक्ति हमें उसमें हमारी टीम में आ सकता है, तो हम उनको इन्वाइट करते हैं. तो ऐसा भी हुआ है कि बाद में ये लोग हमें मदद करने लगते हैं, हमारे फैकल्टी होते हैं या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, different roles they take happily. So in that process also it will help you to get going with some small presentations or small, if you are, some of the people may feel that हम बात करने में थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम कुछ शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आप मुझे भेज दीजिए, मेरा व्हाट्सएप सबके पास है, तो वो भी हम लोग देखकर फिर उसको ग्रुप पर हम लोग आपके नाम से डालेंगे, so that everybody knows that you have prepared something like this. तो ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य था. अगर मैडम रेडी है तो मैडम यू वांट टू स्टार्ट? अमैया मैडम? Yeah, will do. Yeah. And wherever required you can ask me. तो ये सेशन
जहाँ लगता है वो मैं भी उसमें सेशन में मेरा कुछ हाँ, योगदान definitely, sir. We can combine. जी, आप स्टार्ट कीजिए। Physics part you are going to conduct, no? हाँ, फिजिक्स में उसको कनेक्ट कर दूंगा फिजिक्स से। वो ठीक फिजिक्स पे है। खास करके जो न्यूटन के लॉज है और बाकी सब बातें उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं आज, या मैटर के बारे में, और फिर आगे बाकी काम आगे देखेंगे। या So till now we have seen the different aspects of the mathematics, like geometry, trigonometry, algebra, right? So mainly in town planning, next topic is ancient town planning. So in that town planning also, uh, this geometry wala part is equally applicable. Okay, so वो कैसे apply किया है, applicable है, we'll just go through some slides. So for presenting means the presentation point of view, I'll be using Professor Vasanta Shinde ji ka slide show, which is already there available on net. Uh, he was VC of Deccan College. Hmm. So archaeology point of view, he has given the many things, the different photos of excavations from Harappa, Mohenjo-daro, and the Dholavira. Hmm. So we'll just go through the town planning part, how the particular city or the uh, area was developed at that time. Okay, using the again the geometrical shapes. If you uh, go through those different cities ka structure, town planning ka structure, तो उसमें definitely you will get this mathematics as well. Okay. So here, I hope this is visible to you. Hmm? यस यस Yeah. So chronology is given in this particular slide. So in this Neolithic period, Mesolithic and Paleolithic period is mentioned. So archaeological label is there, that is ceramic phase. The chronology means the years are mentioned. We'll be looking for the Harappa period, post Harappa period, etc. But mainly Harappa and the development of the town. Fine. So Harappa period, it is from 3300 to the 1300 BC. इतना पीरियड हड़प्पा सिविलाइजेशन का था. एंड few caves were found in that particular area, and in which the different means the people used to get shelters for with the help of this means caves for hunting purpose. ऐसा ये caves का ये यहाँ पे excavation जो किया है उसमें एक एक ये सब मिला है, but mainly will be focusing on the excavations related to town planning. So there are few things. So the city was developed. So n number of cities were there, especially the Harappa and Mohenjo-daro. These two sites are there where the lot of things were found. Okay, and similarly the Dholavira or the situated in the Gujarat area. So if you observe, all the shapes, geometrical shapes were found in the excavations. See this. You can correlate whatever we have means this is early Harappan period.
this particular site. So starting with the Shulva Sutra, which is Bodhayana Shulva Sutra, जिसमें actual for sacrifice the chiti or the yajna kunda was designed, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो वहां पे हमने देखा था, so same is means the period, if you observe, same uh, was developed in the Harappan period, pre-Harappan period as well. So different geometrical shapes were seen in these sites. So these are the different means the structural remains to measure. They used to have the archaeology used to have the measurements, different measurements. So this is the overall plan of the city or the structures which were found in the Harappa civilization, you can see. So I can give you one example of Chandigarh city. Right now, the Chandigarh city, it is also the planned one, planned city. It is said to be the planned city, and in which different sectors are placed. Sectors are there. So similarly, in Harappa and Mohenjo-daro period as well, those sectors were related with the, again, the symmetrical forms are there, plus the geometry is involved. The triangular shapes are there, squares are there, rectangles are there, and all the city is means whatever is, it is divided into number of parts. These are very much identical one. Okay. So these are few more structures in which were found in excavations. See this. So as a city, they were means these cities were developed and proper town planning was mentioned in this. Okay, so this is the city plan, layout plan of the Harappan cities, Harappa civilization, you can say. So this, so here the north gate is shown. This is again the Dholavira site. Dholavira site. This is the town planning shown for the Dholavira. Then for Mohenjo-daro, we all uh, we all have studied this part in history in school days, but means Great Bath. Mohenjo-daro, the Great Bath is shown over here. So these major cities are shown, and whatever right now we are seeing or observing on the screen, these are the applications of the mathematics. So ancient mathematics was so developed, like geometrical aspect. So those concepts were applied while designing these cities. Okay, so designing while designing or the uh, town planning aspect, this particular these are the few evidences are there.
excavations are there. Parallel wall structures were observed in these excavations. So ultimately, these ancient mathematics they have applied while designing the city like Mohenjo-daro or Harappa. Town planning point of view, they have just given. Means architecture is the another thing. Initially, architecture was there like in Vedic period. Architecture, if you go through the Vedic period, in that Purandara, Indra was the hero, and Purandara Puran Dharayati iti Purandaraha. So the Purandara is the name, one of the name of the Indra, and Indra Puran Pura is the city, and city are which were consist of the protective wall. हाँ, जैसे फोर्ट्स में होता है. So those cities were like forts only. स्थल दुर्ग होते हैं, वैसा ही था. And he was the leader. Indra was the leader. Okay. So the Indus civilization and the Vedic Sindhu Sanskriti Vedic period, वहां से ये सब town planning later on in Kautilya Arthashastra also, the two different chapters he has written on the Durga Vidhana and Nagara Vidhanam. So Kautilya has given the Nagara Vidhanam, that is the separate town planning section for the for designing of the city. जैसे सिटी के मतलब उसमें डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, कहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकेशंस आर इम्पोर्टेंट, directions are important, and accordingly the city is designed. So we can compare the Harappa Mohenjo-daro cities, okay, with the means earlier text available is the Kautilya Arthashastra, you can say, in which the town planning is included, and that particular town planning, it is again more or less similar to the Raigad, the Rajdhani of the or the capital of the Shivaji Maharaj. So वहां पे भी उन्होंने जो कुछ भी सिटी एक नगर वसवलंय असं म्हटलं जातं, ऐसा कहा जाता है, एक नगर ही है. सो नगर रचना, इट इज अगेन सिमिलर टू द कौटिल्य टाउन प्लानिंग नगर विधान चैप्टर, इन विच यहाँ पे भी जैसे शॉप्स आर देयर इन रायगढ़, shops are there, then the temples, Raja Sabha, Raja Darbar, then the palace is there, the place where actual कॉइन्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, ये सब छोटी छोटी चीजें उन्होंने दी है. एंड इट इज सिमिलर टू कौटिल्य अर्थशास्त्र नगर विधान चैप्टर. Okay, so all these are very interconnected from the mathematics Shulva Sutra to the here the up to the capital of the Shivaji Maharaj. So this is overall about the town planning. Sir will continue next part like Indus Valley civilization and the physics part as well. Yeah, I thank you so much, Ameya ji. So I hope I'll just take it forward and try to connect it with what she has already told. Like we saw Indus Valley. Are you able to see my presentation? Can you pin and just see? Yes. What yeah. Yeah. Okay. So actually, no, as she rightly said, and we know this is such a massive towns. I mean, we know Harappa and Mohenjo-daro, but they were close to about 200 well planned towns existing in that area. So when you make something in such a massive scale, इतने बड़े इस पे आप कर सकते हैं और इतना रिपीटेबल उसको बना सकते हो. एक्सपेरिमेंट को एक टाउन बनाया ठीक है, लेकिन 200-500 टाउन बनाना
That means you have perfected the science and technology of it. That only means. And standardize also. So from where that standardization and the exact measurement all came, that is because they had terrific grip on physics, on mathematics, and also on what we call as astronomy. All the connected sciences, in fact, not only this, but all other sciences. For example, as we mentioned in the earlier part also, that this bricks which were used for this entire town planning, they used to be standard sizes, and every brick will have a particular length, width, and height, and then there will be mud bricks which are burnt or baked and used as the raw material. And what should be the dimension of brick also has been properly structured and standardized. What should be the distance between different walls, the width of it, the height of it, the the depth, everything has been properly documented first, and thereafter it has been constructed that way. अभी जब ऐसा कोई करता है तो उसको वो साइंस में कौन से साइंस पता होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो साइंस उसको पता होना चाहिए वो फिजिकल वर्ल्ड का साइंस है. फिजिकल साइंसेस मतलब जिसको हम लोग पदार्थ विज्ञान कह सकते हैं या फिजिक्स कह सकते हैं, और उसका गणित या मैथमेटिक्स मतलब उसमें भूमिति भी है और अंक गणित अलजिब्रा भी है, और हायर जैसे हमने पहले पार्ट पे देखा कई सारे एडवांस मैथमेटिकल भाग भी उसमें आते हैं. तो ये बहुत जरूरी है. मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शिल्प सूत्र से उनका जो राइट एंगल ट्रायंगल्स उन्होंने बताए, बाद में जो टाउन्स के सारे डायमेंशंस थे वो अंगुल है, धेनु है, और ये जो डायमेंशंस अगर आप माइकल डैनिनो या और कुछ अभ्यासकों का ये पढ़ेंगे, वसंत शिंदे जी का भी उल्लेख हुआ, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ये पूरी तरह से साबित किया है कि कितना स्टैंडर्डाइजेशन था. आई जस्ट वांट टू गिव वन एग्जांपल दैट द यूनिट्स व्हिच वर यूज्ड for this linear measurements in India are they were so standardized that similar were used in Egypt, in Mesopotamia, in China, in Japan and other parts of the world, and even Greco-Roman civilization. थोड़ा फर्क है, एक डेसिमल में फर्क थोड़ा दिख रहा है हमको, और डैनिनो उसको कंपेयर भी करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यहाँ से आप वहाँ कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दो तीन चीजें होनी चाहिए. एक तो आपका फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. दूसरा यह क्योंकि यहाँ ग्रेन भी प्रोडक्शन अच्छा था, एग्रीकल्चरल बहुत बढ़िया था, ये पूरा सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, यू नो about that a little, but the grain storage and the entire agriculture, next time we are going to take that topic. But it is one of the strong points of Indian science application is in agriculture and horticulture and all that. But apart from that, we also had so many other things. Artifacts were there, statues were there. We had different metal products which were and ceramic products, pottery. They all were exported. हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमें कुछ स्केल्स मिले हैं, जो जैसे आज के स्केल होते हैं वैसे दे आर ग्रेजुएटेड स्केल्स. Just like we have here inch scale and millimeter scale and centimeter, similar scales are found there also. In this presentation, I do not have that particular photo of the scale, but I can send it to you if you want to see how the scale was that time. Not only here, but as far as, all these places, what we see here, there is Dolavira, Rangapur, Rojidi, Lothal, Sarkodda, Kuntasi, Padri, Kalibangan, Bhagwanpura, Banavli, Diyamabad, आलमगीरपुर एंड मऊदा. इतने केस तो क्लियरली है. इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कई सारे केसेस. अभी अब जब ओशन आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, द्वारका का एक्सकेवेशन चल रहा है, या श्रीलंका में कुछ जो बिलो ओशन कुछ टाउन्स थे उनको धीरे धीरे एक्सकेवेट किया जा रहा है. कोइंसिडेंटली डॉक्टर वसंत शिंदे ही द्वारका एक्सकेवेशन या ओशन जो सारा आर्कियोलॉजी चल रहा है उसके प्रमुख है. But this is a massive thing happening. What is to be noted here is, unless somebody has a proper physics and knowledge of physics behind, because why I'm saying physics, because you should know all types of materials, their combinations, their alloys, compounds, and you should also know some of the people here are actually from physics and science side or engineering side, so I'm using those terms. You should also know something about hydraulics, fluid mechanics, and such topics also, thermodynamics. क्योंकि एक पूरा टाउन और उसकी व्यवस्था प्लान करके उसको फिजिकली बिल्ड करना, आपने सुना रहेगा ये सारे जो टाउन्स थे उसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम थी और वाटर सप्लाई सिस्टम भी काफी अच्छी थी.
So if you want to supply water from one point to the other point, because there were common wells, there were individual homes were having wells, then there were lakes, they were having proper water body management was terrific. Apart from the rivers which were making this entire land sujalam sufalam, as we all know. So always there was a great, you can say, mm, uh, grace of having water coming from all the Himalayan rivers. That's why we call it Sapta Sindhu Pradesh and all. But they were not depending on that. That's the beauty of it. Entire India is having supposed to be having a lot of regions full of monsoon and surrounded by ocean and number of rivers there. But beauty is they knew how to store the water for the months when rain is not going to be there, and that's why all this technology has to be connected with the culture. So they will always say that this water lake is dedicated to this god, and this belongs to this, and therefore we are not supposed to pollute it, we're not supposed to misuse the water. So and it is still found in many places. I can tell you the British chronicles in Madras presidency or Calcutta presidency, Mumbai presidency, these were the Bombay that time. So Bombay presidency, these were the three main areas during that time. And they have written, the British officers have written how many water collecting and storing and supplying bodies are found during 18th century also. So right from Vedic time to the Harappa and Mohenjo-daro, covering the Ramayana Mahabharata, and thereafter all the Shastras period also, till Kautilya, as we just now mentioned, and then up to the Middle Ages, to Guptas and Vardhanas, and thereafter the Marathas, and all these people continued something very phenomenal. That is the uh, towns were well established, the forts were well constructed, and then the water bodies were maintained, and water supply for agriculture as well as कॉमन सिटीजन दोनों के लिए पानी चाहिए. जहां पानी आप पूरे 12 महीने पूरी तरह से अच्छा पानी दे सकते हैं, बाकी सारी जीवन का विस्तार उसमें हो जाता है. तो इसलिए हमारे यहाँ पानी का जो नाम है वही जीवन जीवन उसको कहते हैं पानी को, और फिर लाइफ को भी जीवन कहते हैं. तो ये वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आपका अच्छा उसके ऊपर ग्रिप चाहिए. बाकी लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये दो सब्जेक्ट जो है वो पानी का सारा गुणधर्म या कोई भी लिक्विड का गुणधर्म उसमें काम करते हैं. उसको प्रेशर कितना लगता है, प्रेशर ड्रॉप कितना हो सकता है, आप जब बेंड करते हैं तो कितना फ्रिक्शन में जाएगा, उसका फ्लो रेट, वेलोसिटी, और उसका जो प्रेशर है, प्रेशर हेड जिसको बोलते हैं, कि अगर आपको अभी भी ग्राउंड फ्लोर से तीसरे माले तक पानी पहुंचाना है, आपको सोचना पड़ता है कि कैसे उसको पंप करेंगे, और ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से नीचे ला सकते हैं. ये सारा ज्ञान होने के बिना इतना बड़ा वाटर मैनेजमेंट हड़प्पा मोहनजोदड़ो में असंभव है, उसके बिना नहीं कर सकते. उसके आगे की चीज देखिए, वो लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो अभी भी हमारी वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम आज के हमारे मेट्रो सिटीज में भी ठीक नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने ठीक से उसको करके दिखाया था. तो ये क्यों संभव हो गया? क्योंकि जिसको हम लोग और सिर्फ ये जैसा हमने कहा वेदांग से ये स्टार्ट हो रहा है, हमारा वास्तुशास्त्र वहां से आ रहा है, और उसके बाद अनेक शास्त्रों में उसका उपयोग किया गया, फिजिकली एक्चुअल उसका दिखाया गया कि कैसे करना है. और हमारे जो दर्शन है वो सारे दर्शन जो है वो फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा आपको कुछ विवरण दे रहा हूँ, बिकॉज इन अ लिमिटेड टाइम यू शुड जस्ट गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज हिस्ट्री और अमाउंट ऑफ थिंग्स व्हिच आर डन इन द फिजिकल साइंसेस इन इंडिया. एंड देयर आर मॉन्यूमेंटल एविडेंसेस, जो हमारे अलॉय स्टील में हमने जो चीजें बनाई है वो मेटलर्जिकल नॉलेज होने के बिना संभव नहीं, लेकिन आने वाले कुछ इसमें हम लोग मेटलर्जी मैन्युफैक्चरिंग ले रहे, इसलिए मैं उसको और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ. लेकिन unless you know all types of materials, how to extract them from the mines, and then how to purify them, how to distill them, how to bring them in a ingot shape, ingot या कोई स्क्वायर या कोई रॉड के शेप में पहले लेके आइए, उसके बाद उसको जो शेप में आपको चाहिए, कभी शिप चाहिए, कभी आपको उसका स्टैचू चाहिए, कभी आपको उसका कुछ पाइप्स बनाने हैं, ये सब बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग या कोई सुविधा लगती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगती है, जिसको कास्टिंग हम लोग बोलते हैं या फोर्जिंग बोलते हैं या वेल्डिंग बोलते हैं. तो ये सारा नहीं होता तो इतना बड़ा एक साइंटिफिकली टाउन बनाना असंभव है. टाउन के अंदर लोगों को इतना रोजगार देना असंभव है, बिकॉज दे वेर पॉटर्स, दे वेर मेटल वर्कर्स, दे वेर ऑर्नामेंट मेकर्स, दे वेर craftsmen, they were handicrafts and the handloom making people, apart from the agricultural people. खेती पर जो लोग काम करते थे उसके अलावा ये सारे पूरक व्यवसाय भी थे.
तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जो उसका बेस है मैथमेटिक्स, और क्योंकि गणना करनी है आपको, प्रमाण में सबको करना है, मेजरमेंट नहीं होगा तो एक्यूरेसी नहीं होगी, मेजरमेंट नहीं होगा तो फिर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, क्वालिटी भी नहीं होगी। अगर आपको कुछ बनाना है और फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने क्या करके दिखाया कि उसके पीछे का जो शास्त्र है, उसका जो थ्योरी है, वो भी परफेक्शन में था। मैं थोड़ा सा आपको खाली बता रहा हूँ कि कितने कितने ग्रंथों में इसका उपयोग आ रहा है। तो ये जो नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज स्कैटर्ड इन मेनी संस्कृत वर्क्स इंक्लूडिंग वेदास, वेदांगा, पुराणा एंड 6 दर्शनास। मैंने ये जो पर्टिकुलर स्लाइड था मैंने मत्स्य पुराण पे बनाई थी, तो क्योंकि लोगों को लगता है अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं पहले वाले इसको आपको दिखाऊं तो मत्स्य पुराण में कई सारे श्लोक है जो आपको वास्तु के बारे में और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बता रहे। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये पुराण के नाम से हम लोग थोड़े से और टेम्पल आर्किटेक्चर भी बहुत आ रहा है उसमें। इनफैक्ट उसके ऊपर हमने कुछ काम किया था कि कितने वर्सेस में टेम्पल आर्किटेक्चर, वास्तु और फिजिकल साइंस आ रहे। कभी कभी क्या होता है अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसा सब नाम देख के हमको लगता है कि इसमें शायद कुछ विज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये दिस वाज वन मेथड ऑफ ब्रिंगिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स टू अ स्टोरी फॉर्म। लगती तो स्टोरी थी, लेकिन उसके अलावा कई सारे प्रकरण ऐसे कि जिसमें प्रॉपर ये सारे साइंस भी डिस्कस होते थे। ये हमारी पुराणों की विशेषता थी। तो जैसे वेद वेदांग तो है ही, लेकिन उसके अलावा पुराण, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। दर्शन में जो है उसमें सभी दर्शन उस पर काम अच्छा दे रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आज कुछ आपको बता रहा हूँ, गौतम ऋषि का जो न्याय दर्शन है वो फिजिक्स के बारे में बहुत बात कर रहा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स आर देयर, कौन से प्रकार के द्रव्य है, उनमें क्या आपस में रिश्ता होता है, और व्हाट इज गोइंग टू बी दी द कर्मा और दी एनर्जी। एनर्जी को वो लोग यकर वो उस प्रकार से उसको रखते थे, मोशन को, एनर्जी को नहीं, मोशन जो होती है अलग अलग पदार्थों की, उसके क्या लॉज है। तो उसमें न्याय ने तो अच्छा काम किया ही था, लेकिन सबसे बढ़िया जो हमको द मोस्ट इलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, देयर टाइप्स एंड देयर मोशंस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये है वो हमको वैशेषिक दर्शन में मिलते हैं, जो कणाद ने किया था। तो कणाद ऋषि, उनका जैसा आप सब लोग शायद जानते रहेंगे स्टोरी में भी कि उनका एक्चुअल नाम अलग था, अलग अलग नाम उनको अलग अलग इसमें परंपरा में उनका नाम देते हैं। लेकिन वो कण कण का हमेशा बात करते थे, ये कण, ये कण, ये अणु, ये रेणु, ये परमाणु, पूरा जीवन उसके ऊपर उनका उन्होंने लगा दिया था, इसलिए उनका नाम कणाद हो गया। ऐसी एक वदंता है, ऐसी एक आख्यायिका है, शायद सच भी होगी। लेकिन वैशेषिक दर्शन जो है, जिसमें से आज मैं भी आपको कुछ नियम या कुछ रूल्स में आपको जस्ट एज ए इंट्रोडक्शन आपको बताने वाला हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट हाउ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द होल थिंग इज डन बाय दिस पर्सन। उसके बाद सांख्य आता है जो कपिल मुनि का था, और भगवत गीता के दूसरा अध्याय ही सांख्य योग का अध्याय है, क्योंकि पदार्थों का रचना, उसका कारण, उसका महाकारण, और उसके जो सारे आगे के गति नियम है, उसके जो कर्म सिद्धांत है, उसका जो हमारे जीवन का प्रभाव है, वो सांख्य योग का भी विशेष है। और उसको बहुत ही ज्ञान योगी न सांख्या नाम, कर्म योगी न योगी नाम, भगवान श्री कृष्ण भी सांख्य योग को बहुत गौरव से उसका उल्लेख करते हैं। तो सांख्य योग में भी कपिल मुनि के फिर एक बार फिजिकल साइंस और ये सारे जो फिजिकल वर्ल्ड के नॉलेज के पार्ट है वो आते हैं। फिर पतंजलि, कई बार लोगों को लगता है पतंजलि मुनि का जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें तो योगा के बारे में लिखा है, सबको ये सर्वज्ञात है, उस पर भी हम लोग आने वाले इसमें कुछ सेशन प्लान किया है हमने। लेकिन पतंजलि मुनि का एक, आज की भाषा में बोला गया तो एक मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वैसे वो एक वैद्यक के बारे में बात कर रहे हैं, वो योग के बारे में तो खैर कर ही रहे हैं, और फिर वो मानस शास्त्र का तो बहुत इंडेप्थ उनका काम है, और फिजिक्स के बारे में भी काम आ रहा है। मतलब in ancient rishis, yesterday only I was telling to someone that there was amazing multifarious expression of their genius. इसका कारण ये है कि वो बुद्धि से नहीं काम कर रहे थे, they were not calculating and measuring things by their intellect, they had a direct descent of intuition from the top. इसलिए सर्वस्पर्शी प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, यहाँ वास्तुशास्त्र है, यहाँ ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ पे पदार्थ विज्ञान है, यहाँ पर रसायन शास्त्र है, यहाँ पे नौका नयन है, यहाँ पे आज जिसको हम लोग मशीन बोलते हैं उनका उल्लेख है, दंत चक्र वगैरह। ये कैसे एक व्यक्ति को पॉसिबल है, हम लोग सोच सकते हैं। फिर योग भी बात कर रहे हैं, वैदिक भी बात कर रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक सर्वस्पर्शी और दर्शन की उनकी प्रज्ञा थी, वो देख रहे थे ये सब चीज को और बाद में उसको अपने शब्दों में डाल रहे थे, न कि आज जैसे शास्त्र जो पहले शब्दों में कैलकुलेट करते, गणित में करते और बाद में उसको कंक्लूड करने का प्रयास करते। इट वाज जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। उसके अलावा जिसको हम लोग जैमिनी की पूर्व मीमांसा बोलते हैं, उसमें भी
पदार्थ विज्ञान का और ये सारे चीजों का बहुत उल्लेख है। व्यास मुनि की जो उत्तर मीमांसा या वेदांत जिसको बोलते हैं, अर्थात उसमें तो बहुत ही है। एक दो ही मैं आपको उल्लेख बताता हूँ। ओरिजिन ऑफ मैटर के बारे में तैतरीय उपनिषद में क्या लिखा गया है, ये अर्थात वेदांत में आ रहा है उपनिषद का भाग, तो ब्रह्मानंद वल्ली आपने शायद सुना रहेगा। और उसमें पंचकोश की जो थियरी है वो काफी प्रचलित और काफी फेमस है, कि कौन से, जब वो शिष्य ढूंढने लगता है तो उसको पता चलता है, अरे ये तो अन्नम ब्रह्मे दिव्य जानात अन्ना देव कलविमानी भूतानी जायन्ते, अन्न ही सब कुछ है। तो जब वो अन्न की बात कर रहा है, इट इज नथिंग बट अ पदार्थ विज्ञान, वो पदार्थ है, वो अन्न मतलब नॉट द फूड वी टेक, इट इज ऑल द फिजिकल वर्ल्ड इज डिस्क्राइबिंग। तो गुरु बोलते हैं हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन और थोड़ा प्रयत्न करो और थोड़ा आगे सोचो। फिर वो वापस ढूंढने लगता है, फिर बोलता है प्राणम ब्रह्मे दिव्य जानात, प्राण में ही सब कुछ है। फिर वो और आगे जाता है, फिर उसको पता चलता है कि नहीं, प्राण मतलब एनर्जी ही सब कुछ नहीं है, और पदार्थ या वस्तु और एनर्जी दोनों के आगे भी कुछ है। अभी जो आइंस्टाइन के E इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन से अगर हमको पता चला, वो सिर्फ अभी ये पहले दो कोश है तैतरीय के, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, लेकिन उसके आगे और तीन कोश की बात हमारे उपनिषद के ऋषि कर पाते हैं, क्योंकि उनकी प्रज्ञा, जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ विज्ञान पर रुकी नहीं थी। विज्ञान को तो उन्होंने बहुत प्रकाश दिया ही, लेकिन उसके भी आगे वो उसके प्रज्ञा चक्षु देख रहे थे। वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बात ठीक है कि प्राणमय कोश ही सत्य है, वो अन्नमय कोश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, इट इज मोर सटल देन द फिजिकल वर्ल्ड, योर एनर्जी स्फीयर इज सटल देन दैट, एंड एनर्जी एंड द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर सेम, बट देन कैन यू गो फर्दर एंड फाइंड आउट। फिर शिष्य वापस जाता है और फिर बोलते हैं अभी मुझे पता चला ये दोनों भी सच है, उसके आगे का सच है, मनो ब्रह्मेति विजानात, ये मन ही सब कुछ है, माइंड इज एवरीथिंग। ये स्थिति है जहां फिजिक्स, नया फिजिक्स अभी आया है, जब वो कहता है कि it seems that there is a mind which is working behind all these electrons and protons. There must be a mind which is there. It's not the physical objects. कोई उसके पीछे मन है। तो ये उसी समय हम हमारे लोगों ने, जब मैं वैशेषिक दर्शन की भी आज थोड़ा सा उल्लेख करूंगा, आपको पता चलेगा कि जब मूल द्रव्यों की बात होती है तो तभी कणाद हो या कपिल हो या कोई भी हो, उसको फिजिकल पंचमहाभूत के साथ ही वो मन को भी जोड़ते हैं, अंतःकरण को जोड़ते हैं। ये अभी भी फिजिक्स के कक्षा में नहीं आया है, वो उसको अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन और पदार्थ, mind and the physical world, they are not away from each other as per the Indian philosophy or the Indian darshanas. तो इसलिए ओरिजिन ऑफ मैटर का एक श्लोक मैं आपको पढ़ता हूँ जस्ट एज एग्जांपल यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग ये बड़े बड़े टाउन प्लानिंग देखते हैं और आगे जाके हम लोग टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखने वाले, कृषि का विस्तार देखने वाले, कृषि में इतने सारे, मतलब नॉट ओनली नॉलेज ऑफ क्रॉप्स बट दे हैड परफेक्ट नॉलेज ऑफ वाटर्स, फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। ये कैसे संभव हो गया? फिजिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी तो, मैथमेटिक्स पे नहीं होगी तो ये सब आगे का विस्तार नहीं होगा। इसलिए हमने ये कोर्स में भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स थोड़े पहले रखा, और फिर अभी टाउन प्लानिंग आगे जाके और चीज हम लोग उसके ऊपर जोड़ते रहे। तो ओरिजिन ऑफ मैटर कहाँ से आ गया? तैतरीय उपनिषद कहता है ब्रह्मानंद वल्ली में, तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायो अग्नि, अग्ने आपः, अदभ्य पृथ्वी। क्लियर है, क्लियर इंडिकेशन है क्या इसे कहा गया? फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट कॉज स्पेस केम, फ्रॉम विच द विंड केम, फ्रॉम विंड द फायर केम, फ्रॉम फायर द वाटर केम, फ्रॉम वाटर अर्थ केम। तो सिर्फ पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए वही नहीं, उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, उससे आगे क्या हो गया, और फिर ये पंचमहाभूत हमारे लिए सबसे प्रमाण है। इस प्रकार का आगे आप जानते हैं कि इसका, बट गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट, चाहे इलास्टिसिटी के बारे में श्लोक हो या इंद्रधनुष के बारे में हो या फिर ग्रह तारों के गति के बारे में हो या स्पीड ऑफ लाइट के बारे में हो, जैसे ऋक् संहिता में श्लोक आता है, तरणी विश्व दर्शतो ज्योतिर्कुदसी सूर्य विश्व माभासी रोचनम। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या हो सकता है? ये जब सायनाचार्य ने उसके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी तो उन्होंने उसको ये उस पर जोड़ दिया कि ये एकेन निमिषार्धे न क्रममाण नमोस्तुते, ये निमिष में अर्ध निमिष में इतना इतना डिस्टेंस जाता है। इसका मतलब आज के भाषा में इसको अगर परिवर्तित किया तो स्पीड ऑफ लाइट आपको मिलता है विच इज वेरी क्लोज टू 2202 निमिषा योजना in half a nimisha. In other words, if you just convert it into SI units or the MKS unit what we generally know, तो एक योजना 9 माइल है, 110 यार्ड मतलब 9.6 माइल्स है। इसका मतलब 2202 योजना जब कोई बात करता है, that only means it is 21,144 miles. How much time is taken to travel 21,144 miles? Half of the nimisha. अभी निमिषा की बात करेंगे तो आधा निमिष का मतलब है 1/8.75 ऑफ द सेकंड, दैट मींस 0.11 सेकंड। जस्ट आप सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो हाफ निमिष ट्रैवल करने को
हाफ निमिष में आप अगर इतना जा सकते हैं, मतलब प्रकाश का जो वेग है वो होगा आपका 186,000 माइल्स पर सेकेंड, जो कि आधुनिक भाषा में भी हमने बताया। ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। किसी चीज का मेजरमेंट कर पाना, एक्यूरेटली कर पाना, उसको फिजिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर पाना कोई आसान चीज नहीं है, अनलेस समबडी हैज कंप्लीटली ग्रिप दैट साइंस। इसलिए जो आविष्कार हमको दिखते हैं, जो हमने ये हड़प्पा में तो देखे ही, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मौर्य काल में भी कई सारे आर्किटेक्चरल स्तूप और मॉन्यूमेंट्स आपको दिखते हैं, जो आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं। और कई सारे पिलर्स और स्तूप्स जो डोम शेप में है। तो जब बाहर के भी पिलग्रिम्स यहाँ आते थे, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ याद आ रहा है। जो मैगस्थनीस था, जो उसने जब मौर्य काल में उसने जब जो राजा दरबार था चंद्रगुप्त का वो देखा, और उसका जो पूरा राजप्रासाद देखा, तो उसने कहा कि ये राजप्रासाद जो मैं देख रहा हूँ, ये असंभव है कि कोई मनुष्य ने बनाया, ये जरूर किसी बाहर के गंधर्व बिंधर्व या जो भी आप उसको एंजल बोलिए, उसने बनाया होगा। तो फाहेन ने भी ऐसे ही कुछ कहा था। फाहेन ने अशोक का ये पैलेस देख के कहा कि दिस मस्ट बी मेड बाय सम कॉस्मिक स्पिरिट्स और एंजल्स, इट कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो असाधारण अभिव्यक्तियां जो उन्होंने फिजिकल प्लेन में की, ऐसे बड़े बड़े स्तूप और ऐसे बड़े पिलर्स और उसके ऊपर इंग्रेविंग्स, उसके ऊपर वापस नक्शी काम वगैरह, जब स्टोन की उसके ऊपर काम करने वाले हथियारों की, उसके लिए लगने वाले सारे प्रक्रियाओं की फिजिक्स आपको पता नहीं है, तब तक ये आपको संभव नहीं है। इट्स नॉट मिरेकल, यू नो। somebody has said very rightly that miracle is that for of which science is not known। जिसका आपको साइंस मालूम नहीं, ऐसी चीज को आप चमत्कार बोलते हैं। हर चमत्कार चमत्कार नहीं रहता जब उसके पीछे का साइंस आपको पता चल जाता है। तो हमारी विशेषता यही थी कि हमने इस सारे विज्ञान को सिर्फ पुस्तकों में नहीं देखा, उसके ऊपर कॉन्क्रीट काम करके उसको फिजिकल प्लेन में भी लेके आए, लोगों के सामने रखा हो, और इट इज लाइक ए मॉन्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये इतना बड़े मॉन्यूमेंट है, अभी सुवर्ण में है, स्टोन्स में है, बाकी धातुओं में है। धातु में भी अगर आप स्टील लेंगे तो स्टील के भी बहुत ही हम लोग उसमें बाद में आने वाले, इसलिए मैं आज उसको सब नहीं बता रहा हूँ। लेकिन स्टील में आप जब काम करते हैं तो आपको अनेक घटकों पे और काम करना पड़ता है, और फिर अगर आपको कार्बन, क्रोमियम, निकेल, ये सब घटकों पे और काम कर रहे हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू नो ऑल ऑफ देम इन द फिजिक्स, अदरवाइज आपने कैसा काम किया हो। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं। और उसका जो परमोच्च आविष्कार जो आने वाले कुछ सत्रों के बाद हम लोग लेने वाले, जो हमारे मंदिरों में आया, तो ये सारा भाग फिजिक्स की शुरुआत का भाग है, इसलिए हमने आज उसको थोड़ा सा अल्प इसमें हम लोग जोड़ रहे थे। मैं एक संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जो हम लोग न्यूटन को एट्रीब्यूट करते हैं, न्यूटन के थ्री लॉज ऑफ न्यूटन, बचपन से हमारे टेक्स्ट बुक्स में ऐसे लिखा जाता है कि ये न्यूटन के लॉज है। एक्चुअली ये तीनों जो है उसका मूल आपको वैशेषिक दर्शन में मिलता है। मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ उसको, सो दैट दिस थ्री लॉज which वैशेषिक दर्शन has given and how वैशेषिका is going beyond what Newton or other people have not given। मतलब उन्होंने जो लॉ बनाए वो तो यहाँ थे ही, लेकिन उसमें कुछ जो बातें नहीं थी वो भी यहाँ पर थी। कैसे, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। एक पहला लॉ जो था वो संयोग विभाग वेगानाम कर्म समानम, ये वैशेषिक दर्शन के 1.1.20 श्लोक है। दूसरा श्लोक है गुरुत्व प्रयत्न संयोगानाम उत्क्षेपणम, ये दूसरा है, मतलब 1.1.21। और तीसरा लॉ दिया है मणिगमनम सूच्याभिसर्पणम अदृष्टकरणम 5.1.25। अलग अलग उसके ऐसे सूत्र है, लेकिन अगर आप उसका नाम मतलब उसका मीनिंग आज के सिंपल भाषा में उसको कनेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे, तो पहला जो श्लोक था, पहला जो सूत्र था कहेंगे, उसका जो अर्थ ये आता है कि मोशन इज द कॉज ऑफ कंजंक्शन, disjunction and velocity। motion is the cause of it, something is moving, that's why it will have velocity, that's why it will have some disjunction or conjunction। उसके बाद बताते हैं दूसरे इसमें कि motion against gravity is due to effort and conjunction is the effect of it। मतलब आप उसको देखिए किस प्रकार से कणाद रख रहे हैं, या वैशेषिक दर्शन उसको किस प्रकार से रख रहा है। and motion of precious stones and compass needle is due to some invisible कॉज। ये भी उसमें उसको पता चल गया कि कंपास की जो नीडल मूव हो रही है, तो शायद उसके पीछे, ये मोशन के पीछे कोई, बिकॉज ही इज टेलिंग दिस इन बिटवीन, ये सब सूत्र आने के पहले ये क्या बता रहे हैं, इन शॉर्ट जो न्यूटन बता रहे हैं वो, कि अगर आपको गति दिख रही है उसका मतलब कोई तो उसका कारण है, कोई वो चीज जो स्थिति में थी उसको हिला रहा है, इसलिए वो गति में गई। लेकिन गति में क्यों गई वो, क्योंकि कोई था जो उसको उसके पीछे चेंज कर रहा था उसको। लेकिन जितने
प्रमाण में उसको चेंज करेगा, उतने प्रमाण में उसकी गति भी बढ़ेगी। ये सब उसके वो बीच में के 1.1 से लेके 1.5 तक, ये सब 5.1 तक ये सब आ रहा है। लेकिन और कुछ आ रहा है जो शायद न्यूटन ने उसके लॉज में नहीं लिया था, बाद में लोगों ने उसको ऐड किया, फैराडे ने और बाकी सब लोगों ने, कि उसमें ऐसे भी कोई फोर्सेस है जो शायद आपको अभी विजिबल नहीं दिख रहे, दे आर इनविजिबल कॉजेस। इसलिए उसको उदाहरण के लिए कंपास का नीडल, ये चुंबकीय एनर्जी के वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। So you can't say that it is moving because somebody is pushing it. It's not the physical force which is pushing, but there is also some energies which are not visible. Say the magnetic field or the magnetic force which is moving it. There can be some energy which is moving because of the electricity. तो ये सारा भी उसमें ये जब लॉ दे रहे थे वैशेषिक दर्शन वाले, उसमें वो दे रहे थे। और एक उदाहरण संक्षेप में, because this is such a big huge thing on वैशेषिक दर्शन itself, we can have a lot of talk. लेकिन एक छोटे उदाहरण, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हमारा इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इसका एडवांस कोर्स बाद में आता है। तो इंट्रोडक्टरी कोर्स में हम लोग सारी सब्जेक्ट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी फेज में जिनको इंटरेस्ट है उनको थोड़ा उनकी मन में उसके बारे में इच्छा या रुचि इसका निर्माण हो, इस प्रकार से हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जिसको हम लोग कार्य कारण भाव कहते हैं, जो सारे गति के पीछे है, सारे कर्मों के पीछे है, सारे हम जो बदलाव देखते हैं उसके पीछे कार्य कारण, जिसको हम लोग कॉजेशन, द लॉ ऑफ कॉजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेस टाइम एंड लॉ ऑफ कॉजेशन, फिजिक्स के ये 3 पिलर्स है। तो हमारे इसमें मतलब जैसा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में धीरे धीरे इसका जो विस्तार हो गया, उसके बाद आइंस्टाइन ने उसको पूरी तरह से उसका ये डायमेंशन चेंज कर दिया, उसका परसेप्शन पूरा चेंज हो गया। लेकिन कॉजेशन जो, या लॉ ऑफ जो कॉजेशन है, या the level at which all these things are true, up to that level there is some truth and perfectly you can say connected things in that. तो इसलिए if there is a effect then there must be a cause, and that cause may be the effect of some other cause. इस प्रकार का जो हम लोग बात हमेशा आधुनिक विज्ञान में या फिजिक्स में बेसिकली करते हैं, तो उसका ये वैशेषिक दर्शन में 1.2 जो श्लोक है वो ऐसा है, कारणाभावात् कार्याभावः न तु कार्याभावात् कारणाभावः। That means there is no effect possible without a cause, but absence of effect does not mean that the absence of cause. ये जो सेकेंड लाइन है, ये भारतीय कह सकते हैं ना, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय ऋषि, इनकी जो विशेष था, जैसे मैंने अभी भी बताया, वो चुंबक की बात करते, कुछ इनविजिबल भी हो सकता है। यहाँ भी एक विशेष आपको हर बार लॉ तो दे रहे, वही लॉ दे रहे जो बाद में 50 या 500 या 1000 साल के बाद यूरोपियन साइंटिस्ट ने दे दिए, लेकिन जहां उनकी नजर नहीं जा रही थी, ऐसे भी कुछ सटल पॉइंट हमारे लोग मेंशन करें। यहाँ भी एक पॉइंट बहुत सटल आ रहा है, कारण भावात कार्य भावा, ये तो ठीक है, मतलब देयर कैन नॉट बी इफेक्ट विदाउट कॉज, ये तो लॉ ऑफ कॉजेशन उसने बता दिया। लेकिन सेकंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एब्सेंस है इफेक्ट का, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कॉज नहीं है, मतलब कॉज होगा लेकिन कभी कभी इफेक्ट आपको एब्सेंट दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसका कैसे ना, उसका एक जो कलाकार बहुत ही पहुंचा हुआ कलाकार होता है, वेरी स्किल्ड आर्टिस्ट और ए वेरी स्किल्ड एनी साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, ही इज एबल टू गेट दैट नुआंसेस ऑफ इट, वेरी सटल थिंग्स ऑफ इट व्हिच जनरल पीपल डोंट गेट। ये पॉइंट है वो, कि आपको शायद उसका इफेक्ट आज नहीं दिखेगा, लेकिन ये मत सोचिए कि कॉज नहीं है, कॉज हो भी सकेगा, लेकिन उसका इफेक्ट शायद बाद में दिखेगा, या बहुत आपके परसेप्शन के स्तर के नीचे या ऊपर रहेगा वो। जैसे हम लोग आज कहते हैं कि वहाँ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरण है, हमें नहीं दिख रहे, लेकिन वो है वहां पे। सो दैट मीन्स it does not mean that if there is no effect for you from your point of view, that does not mean that there is no cause. तो ये सेकंड लाइन मुझे लगा, हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूँ सेकंड लाइन, मैं बहुत प्रभावित होता हूँ इससे, कि you have to apply a force so that the whatever is a friction in that body that has to be overcome, फिर वो बॉडी स्टार्ट करेगी मूव होने के लिए, ये बात वो बता रहे हैं। और इसलिए फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब तक वो फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम नहीं हो रहा है तब तक बॉडी मूव नहीं होगी। ये उसका सटल पॉइंट, वहां से फ्रिक्शन का पार्ट वहां से स्टार्ट होता है। ऐसे कई सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं कि, लेकिन शायद आज का जो समय हमारे पास है उसमें यहाँ पे थोड़ा हम लोग रुक जाएंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा समय दे देंगे। सो आई थिंक आई विल जस्ट go back to the question part. If at all there are some observation questions from your side, please go ahead. हाँ बोलिए। हाँ सर, थैंक्स अ लॉट पहले अमेया जी को, आपको भी इतना सही इंसाइट देने के लिए। मुझे ये क्वेश्चन है कि जो आपने जैसे बताया कि हमारे लाइफ में फिजिक्स और जो भी साइंसेस थे वो ऐसे घोल दिए गए हैं, शायद रिटर्न ज्यादा नहीं है, बट
प्रैक्टिस तो हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो जी। आज का साइंस भी बता रहा है, सालों से कर रहे हैं। तो रिसेंटली एक बात एनकाउंटर की मैंने कि उत्तराखंड और हमारे जो पहाड़ी विस्तार है वहां पे फ्लोर मिल जो है वो पानी से चलती है, वाटर फ्लोर मिल। और वैसा ही रिसेंटली जब ये रशिया यूक्रेन का सब चल रहा था तो रशियन कल्चर के बारे में थोड़ा देख रहे थे, तो उधर भी एक ऐसा मिला गांव जहाँ पे दिस इज वो बोले जाते हैं कि द लास्ट फ्लोर मिल, वाटर फ्लोर मिल ऐसा है। तो अभी उसके बारे में सोचा तो जैसे कि रोमन लोगों ने वहां हमारे यहाँ दिया है, ज्यादातर वो ऐसा ही बोलते हैं कि सभी कुछ बाहर से आया है। सो ऐसी सब बातें जो हैं अगर हमें जाननी है तो वो कैसे मतलब डिकोड कैसे कर पाए कि कौन सा ऐसा कुछ बुक्स वगैरह है जहाँ पे हम ये समझ पाए जो आप अपना इतना इलेबोरेटली जो साइंस बता रहे हैं सारा। तो हाँ, हम बुक्स है, इसमें बुक्स अवेलेबल है। हम क्या करेंगे कि इसका जो बिब्लियोग्राफिकल या जो भी रेफरेंस बुक्स का एक लिस्ट बना के, फिजिक्स का भी, अब पहले वाले तो मैथमेटिक्स के तो मैडम ने दिए थे, फिजिक्स का तो सबसे बड़ा जो हमारे पास यू कैन से एक्सप्लोरेशन है वो वैशेषिक दर्शन में हुआ है। उसके बाद बाकी भी दर्शन, सांख्य या बाकी दर्शन में भी हुआ है, वैशेषिक में सबसे ज्यादा हुआ है। तो उसके बुक्स अवेलेबल है, वो मैं आपको दे दूंगा। मतलब आई कैन गिव द नेम्स ऑफ दैट। वन ऑफ द नेम आई कैन इमीडिएटली मेंशन इज the Vaisheshik Darshana book written by a treatise on physical and cognitive sciences. ये पुस्तक है, it is written by Dr. Narayan Gopal Dongre and yeah, published from Pune. Varanasi also, I think. okay. Two places it is. The author is from Pune, but the people are who sought it are from Varanasi. It's available. But there are many such books which are available, which are, जैसा आपने कहा पानी पर चलने वाली चक्की, ये औरंगाबाद में भी है, महाराष्ट्र में कई सारी जगहों पर है, जो हम लोग एंशंट ये जो वाटर बॉडी मैनेजमेंट में आपको बता रहा था, वो भी बहुत ही अविश्वसनीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग उसके अंदर है। तो उसके बिना आप नहीं बना सकते, यू कांट वर्क विथ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स अनलेस आपको उसका पूरा ज्ञान है। राइट। और कोई क्वेश्चन आइदर फॉर मी और फॉर अमेया मैडम? सर आप ग्रुप में बुक का नाम दे दीजिए ना प्लीज। व्हाट्सएप अभी जो आपने बोला ना आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, मैं लिख दूंगा। ओके, थैंक यू सर। दोनों पीपीटीज में अभी सर के साथ शेयर कर रही हूँ। ही विल अपलोड ऑन गूगल ड्राइव। जी जी जी। Any question, any observation, any thing, please come out and tell. So don't worry about. आप हिंदी में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछ सकते हैं, मराठी में भी पूछ सकते हैं। हम बाकी लोगों के लिए हम लोग ट्रांसलेट करेंगे अगर आपको मुश्किल है बोलना तो, बट यू कैन स्पीक आउट। आप बोल सकते हैं। Naren ji, this is Sandeep. Am I audible? Yeah. Yeah. Just sharing, I think you were talking about or referring to Patanjali's Yoga Sutra, and normally this is just my observation. People talk about yoga, and normally yoga in the world internationally is talked about only postures and asanas. But I think in Patanjali's Yoga Sutra, which is around 195, I saw that there are only 3 or 4 sutras who talks about actually asana, and rest of it is all about yoga in the sense of mind, and finally how you connect to the ultimate source, which is we call as Jivatma and Paramatma. So I thought I'll just share. You correct me if I'm wrong. If this is correct. Yeah, it's a very valid. Yeah. No, it's very. Yes, it is correct. It is correct, Sandeep ji. Very valid point. Because it's a misnomer that yoga is all about physical fitness and asanas and all that part. Not only that, it is not only about pranayama and the curing of some diseases also. His focus is mainly about the internal accent of the consciousness. So he goes in psychology first, and then further to that, he goes in more subtle words of reaching the Almighty, ईश्वर प्रणिधान, उसमें वो जाते हैं। इसलिए वो धारणा, ध्यान और फिर समाधि तक वो सब अष्टांग योग लेके जा रहे हैं। तो यस, राइट, द before asanas also there is lot he has talked about, and after asana phase, asana is just one of that eight steps he's talking. There also, as you said, the distribution is very clear from that. It's just 1/8 part of the whole thing, or maybe even less in quantity. So ये आजकल थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग उसको पुटअप कर रहे हैं, हमारे Okay, योगा पे काफी thank you. वीडियोस भी है, तो
वो उसमें आपको पता चलेगा कि इट्स मोर अबाउट द माइंड एंड द सटल यू कैन से एक्सेंट ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें। सो योर ऑब्जर्वेशन इज राइट एक्चुअली। या और कुछ है? नमस्कार बोला, हॅलो सर, नमस्कार बोलिए। सर. टेम्पल आर्किटेक्चर वरती आपली मराठीमध्ये काही पुस्तकं आहेत का? तर हो रेफरन्स द्याल का आहेत ना. प्लीज? But those that session is yet to come, so I was just waiting. There is plenty of good books on temple architecture. We'll surely provide you that. One of the great authorities, Okay. Deglurkar sir, you might be knowing. So he has written a lot about that. आता गेल्या आठवड्यात एक पुस्तक प्रकाशित पण झालं आहे दीपा मंडलिक यांचं. That's a new book, but हा and हा that is also good. But there are many books before that also, like Deglurkar sir's हो also हो Vastu Brahma and Bimba Brahma and all. Many books are there. How to see a temple and what is the architectural detailing of that. Again coming back to mathematics. Why mathematics was put here? Because the very foundation of the temple starts with the mathematics. When we take session of temple architecture, there will elaborate that part. But yes, good books are available and will provide you comprehensive you can say references as we go ahead. At the end of the whole session, it will be completing all the series of books. Thank you, sir. Yeah. Any other presentations? How many of you find that idea exciting and you think you can do it? I told you it's not compulsory, nor you should take it as a stressful thing कि भाई हमको करना है, अभी टेंशन आ रहा है, ऐसा कुछ मत सोचिए. You just do it because you like to do it. ऐसा करके आप सोचिए उसको, because you like these topics, so you want to talk about that. That's all. ऐसे करके आप सोचिए. How many of you feel that you can think something like this? कितने लोगों को करना संभव लगता है, या करने की इच्छा है और थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो आप हमको बता दीजिए. नॉट इमीडिएटली नाउ, बट इवन आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो, आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो भी हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं आप. जस्ट टू से दैट या आई एम इंटरेस्टेड बट लेट मी थिंक लाइक दीज आर कपल ऑफ टॉपिक्स आई एम थिंकिंग वगैरह, ऐसा करके हमसे बात कर सकते हैं आप. क्योंकि अभी ये तीसरा. This is Sandeep. I'm definitely interested. Yeah. Let's. Yeah. Let's. Sure. You're interested. Good thing. No, definitely interested. We'll connect with more you and more people on can come forward. subjects इसमें and कोई some स्पर्धा या guidance. कोई Thank you. एग्जाम नहीं है. हाँ. या और कोई इसमें एग्जाम नहीं है या स्पर्धा नहीं है, तो डोंट टेक दैट थिंग. हमें सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा, इट्स अनदर वे ऑफ लर्निंग, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. या सो एनीवे आई थिंक नॉट मच क्वेश्चन, बट व्हेन यू सी द पीपीटीज एंड ऑल, इफ यू हैव क्वेश्चन आफ्टर दैट आल्सो, आप ग्रुप पे उसको क्वेश्चन पूछ सकती है. मैडम को जब टाइम रहेगा वो उसका जरूर आंसर देगी, ऐसा हम आशा करते हैं. और अगर मेरे लिए कुछ क्वेश्चन है तो मुझे भी आप पूछ सकते हैं. राइट? If there are no questions, should we stop for today? Can we stop for today? Yes or no? Okay. So Yes, sir. I we'll think stop so. with the prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Dhanyavad. Same link next Sunday, same time. Thank you.